Hello everyone. Welcome to another case study by Lucky sir. और बच्चों आज की case study है for class 12th grade students and the title of the case study is Goli Vada Pav. So let's have a detailed look towards the whole case study. It is from Unit 4 Enterprise Growth Strategies and the title of the case study is Goli Vada Pav. It's a very famous, vada pav throughout the country. और आप सब लोगों ने से एक या आधी बार ट्राई जरूर किया होगा. So why it is so famous? Why it is beating the competition easily? And what are the few specific reasons behind it? हम इन सब चीजों के बारे में आज की केस स्टडी में पढ़ेंगे. और वेंकटेश अय्यर के बारे में पढ़ेंगे, द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज केस स्टडी. तो बच्चों आज की केस स्टडी में हम सेशन एट अ ग्लांस में 7 पॉइंट्स लेंगे. द फर्स्ट वन इज इट इज लॉन्च्ड इन 2004. सेकेंड वन इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड गोली वड़ा पाव. थर्ड वन इज हाउ इट बिकेम सो स्पेशल, the journey till now. Fifth point, facts behind franchising. Sixth point, very, very important, the training and development. Seventh point, the franchising adds space to the future growth. So let's take up the first point one by one. And we are going to do it in detail because these are the classes of Mavericks India Solution. And we do not take any synopsis, we take details. और बच्चों आप इन केस स्टडीज को पढ़ेंगे, हमारे साथ अटेंड करेंगे, एंड इफ यू टेक ऑल द लास्ट क्वेश्चंस व्हिच इज आवर यूवीपी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, तो आई बिलीव श्योरली यू आर गोइंग टू क्रैक द पेपर्स विद वेरी गुड मार्क्स. सो लेट्स टेक अप द फर्स्ट पॉइंट. Launched in 2004, Goli Vada Pav repackaged Vada Pav, a humble street food popular in Mumbai, into a branded fast food concept. तो बच्चों 2004 में स्टार्ट हुआ और एक हम्बल फूड है मुंबई का, और इसमें एक बन होता है एंड दे स्लाइस द बन इनटू 2 हाफ्स एंड दे ऐड पैटी इनटू इट. पैटी को हिंदी में टिक्की कहते हैं. एंड विद सम इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स एंड सॉसेस. और उससे आउटकम क्या होता है? इट बिकम्स वेरी डिलीशियस एंड टेस्टी. तो उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका है ना, दैट इज व्हाट आई शुड कॉल बिट ऑर्गेनाइज. जब आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज वे से प्रेजेंट करते हो, यू इंक्रीज इट्स वैल्यू टू डबल. द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पॉइंट, it follows franchisee because business model and today is uniquely positioned in India as a QSR segment. तो बच्चों ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे ऑपरेट कर रहे हैं और QSR सेगमेंट में दे आर वर्किंग. QSR stands for Quick Service Restaurant. It's quick service restaurant. Means to say the moment you reach over there, they won't take time in cooking. The moment you'll place the order, then and there they'll serve you. So these are QSR, quick service restaurants. Let's move on to the next slide. The concept behind Goli Vada Pav. Goli Vada Pav, a quick serve food concept with authentic Indian touch, originated in Mumbai in the year 2004. तो 2004 में बच्चों इसका इंसेप्शन हुआ. It got started and Venkatesh Iyer, he is the one, Venkatesh Iyer, and he is the one who is the founder of this specific concept. And Shiv Menon, a co-founder, realized the huge scope of business in tapping the adult and lower income customers by selling widely popular local street food, vada pav, to them
इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो बच्चों इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में सर्व किया गया। लोगों को तो ये पहले से ही बहुत पसंद। अब देखिए मुंबई में कई बार लोग व्हेन दे मूव आउट फ्रॉम देयर होम, यू नो, दे when they fail to have breakfast, what they do, they use these vada pavs as, mini breakfast. So it is very famous, amongst people in Mumbai. तो जब से इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे से सर्व करना शुरू किया, तो पीपल स्टार्टेड लाइक इट इज मोर हाइजीनिक एंड इट इज वेल equipped. इसके अंदर बहुत सारी सॉसेस, डिफरेंट पैटीज ऐड की, they have added different flavors to it. The concept was same, but with different flavors and more hygienic concept, uh, it has started burgeoning. Burgeoning का मतलब है step by step it started, moving on. So he is the person who is behind, I've told you, Venkatesh Iyer and Shivman. But majorly, we talk about as founder Venkatesh Iyer. Let's move on to the next point. Third point. Thus the idea of Indian finger food. ये कॉन्सेप्ट है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है. What do you understand by the term Indian finger food? तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इन ब्रैकेट्स. बट जो फिंगर फूड क्या है कि आप उसे उंगलियों में पकड़ के खा सकते. That is finger food. In an easy layman's language, you can understand this, which you can hold in your fingers and eat. So finger foods are small individual portion of food that are eaten out of hand. हाथ से खाया जा सकता है. So that's why this idea is of a Indian finger food. Fourth point. Goli Vada Pav Private Limited was born that retailed the humble, mouth-watering, spicy ethnic delicacy, which was pocket-friendly, as well as prepared and served in hygienic conditions. तो बच्चों, it is a private limited company और एक बहुत ही humble, basic, mouth watering रेसिपी है, जिसे इन्होंने बहुत एलिगेंटली प्रेजेंट किया और लोगों ने विद ओपन आर्म्स दे हैव एक्सेप्टेड इट. और ये हाइजीनिक कंडीशंस के होने के कारण दे आर, इट इज बीइंग वेरी पॉपुलर अमंग्स पीपल. फिफ्थ पॉइंट. Indian QSR market is flooded with brands like McDonald's, Subway and Quiznos. तो बच्चों आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन पिक अप अ बर्गर एंड यू कैन स्टार्ट ईटिंग इट. तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं और कंपटीशन इज रियली टफ. These are international brands with whom they are competing. But yes, if your product is of a superior quality and superb quality, nobody can dare beat you. Are you getting it? It's just an important point. Fifth one is an important point. Very, very important. Let's move on to the sixth one. Goli Vada Pav, number one, reaffirms the fact that a strong home-grown concept can not only thrive but also compete with international brands. अगर बच्चों आपके प्रोडक्ट में ताकत है, if you have some belief on your product and rest is hope and faith on God, your product can compete with famous and established international brands. So this is what is happening with Goli Vada Pav. So sixth point is also of great importance and I am going to mark it here. Let's move on to the next point. How it became so special. Goli Vada Pav itna special kaise ban gaya? Let's have a look towards some major points. Vada Pav is basically a spicy vegetable patty in bun sold by street food vendors. तो बच्चों जनरली स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एनकैश करते हैं, बेचते हैं. जनरली रोड साइड पर बिकता है ये. आज अगर आप मुंबई में जाएंगे तो आपको कई ऐसे एरियाज मिल जाएंगे वेयर दे हैव सम स्पेसिफिक शॉप्स फ्रॉम वेयर दे आर ऑपरेटिंग. बट इट इज अ वेरी हम्बल डेलिकेसी
for people of Mumbai, and now the other parts of the country as well, based on Goli Vada Pav and its concept. Second point, the brand Goli Vada Pav, number one, has pioneered the concept of selling vada pav through retail outlets. अब इस पे रोड साइड स्ट्रीट फूड वेंडर्स नहीं है, इनकी स्पेसिफिक एक रिटेल आउटलेट है, यूनिफॉर्मिटी है. आप गोली वड़ा पाव एक शहर में खाएंगे या दूसरे शहर में खाएंगे या तीसरे शहर में खाएंगे, यू विल फाइंड द सेम टेस्ट. यूनिफॉर्मिटी है. You can easily locate the locations of these retail outlets. Similarity बहुत है. कभी भी आप मैकडोनल्ड्स को लोकेट करना होता है किसी भी स्टेट पे, तो जस्ट लुक फॉर द साइन ऑफ एम. तो ये सब चीजें इसे एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बनाती हैं, एंड यूनिफॉर्मिटी इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट पॉइंट, द थर्ड वन, the brand's stores offer quality and hygienic fast food which is quite affordable. तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है, बट यस इट इज अफोर्डेबल. 50 rupees, 40 rupees, it is affordable. Fourth point, it sells hygienically prepared food items made in fully automated HACCP certified hands-free plants with an authentic touch. तो बच्चों ये HACCP द्वारा सर्टिफाइड हैंड्स फ्री प्लांट में बनाए जाते हैं, एंड व्हेन दे आर सर्विंग इट टू यू दे वियर हैंड ग्लव्स एज वेल. तो HACCP is an abbreviated form of hazard analysis critical control point. और बच्चों लोगों को क्या चाहिए, देखिए आप डिलीशियस फूड सर्व कर रहे हैं, and that too hygienically, it is going to work wonders with people. And this concept they are using and obviously materializing. जो दिखता है वो बिकता है. एंड आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, की एग्जांपल देता हूं यहाँ पे. कार में होते तो फोर व्हील्स ही हैं, पर एक कार होती है विच इज ऑफ वन स्पेसिफिक अमाउंट ए, एक होती है ए प्लस अमाउंट की, एक होती है ओ प्लस अमाउंट. द रीजन इज प्रेजेंटेशन, द रीजन इज फीचर्स, द रीजन इज इंग्रेडिएंट्स विद इन. तो इस कारण द सेम प्रोडक्ट, द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी चार्ज एंड सोल्ड डिफरेंट. तो ये आर्ट है, ये कला है, ये स्किल है, और ये आप एंटरप्रेन्योर से भली भांति सीख सकते हैं. वेंकटेश अय्यर इज देयर, द वे ही इज प्रेजेंटिंग इट, एक बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट को उन्होंने इतना ज्यादा स्पेसिफिक एंड ब्यूटिफाइड वे से प्रेजेंट किया है that people have started looking for it. Fourth point, it sells hygienically prepared food. Okay, we have taken this. Fifth point, Goli Vada Pav is a typical finger food made of spices, vegetables and mashed potatoes packed in vada. तो ये आप जानते हैं कि इसमें स्पाइसेस डलती हैं, सब्जियां डलती हैं, और उबले हुए आलू की पैटीज बनती हैं जिसे हम टिक्की कहते हैं, और उसको बहुत हाइजीनिकली प्रिपेयर करके विद चीज एंड सेडार चीज, उसके अलग वेरिएंट्स हैं. तो with that they have also increased the amount as well. I have eaten it, that's why I know it. तो rather than a patty you can have a cheese patty, पनीर की पैटी होगी और उसमें एक सेडार चीज का पीस होगा, then vegetables are there, then sauces are there. So it is bit extra priced, but yes, it is superbly delicious as. So I think you should try it once, if you haven't. Let's move on to the next point. Sixth one. Today it is known to be established, reputed and popular Indian fast food brand that offers a clean and ethnic finger food for those who have less money and time. बस आपने जाना है, अपना गोली वड़ा पाव ऑर्डर करना है, then and there you have to pay the money, then and there you have to pick it up, then and there you have to eat it. With lesser amount you can fill your tummy. In 2015 they have a revenue of 55 crores. So for a company which got started in 2004, within a smaller span of 11 years, this revenue is not a smaller one. So it's a quite a good revenue that they have earned. आगे चलते हैं.
Fourth point, the journey till now. First point of point number 4, the sub point. The brand has opted for franchise business model to grab a quick bite into the Indian quick serve business. तो बच्चों अब ये फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं. Franchises में क्या है, there is a person who is having money, who is having a place where he can start his own retail outlet, and then they'll take the franchisee of Goli Vada Pav by paying some, initial amount, and later on, whatsoever they are going to earn, they're going to share that earning amongst themselves and the and Goli Vada Pav. तो जब हम फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ेंगे इन दिस यूनिट, जब हम डिटेल में ये पूरा यूनिट लेंगे, तो आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू इट. तो फ्रेंचाइजी इज समथिंग वेयर एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड asks people to use their name, their standard operating procedures, the way of working in a place that he owns, and then they can share the profits. So let's have a look towards it. आगे चलते हैं. Today, Goli Vada Pav has extensive presence across 40 Indian cities in 6 states. तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जो ये कंटेंट है आई हैव टेकन इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक से लिया है. अब जो मैं कुछ इसमें आपको लेटेस्ट इनपुट्स भी दूंगा, क्योंकि अभी जो हमारी बुक्स में गिवन है वो ये है कि दे हैव एन एक्सटेंसिव प्रेजेंस अक्रॉस 40 इंडियन सिटीज एंड इन 6 स्टेट्स. बट अब तो ये बहुत ज्यादा, अब तो 3 टाइम्स हो गया है. तो I'll give you that statistics as well. Third point, Goli Vada Pav number 1 outlets are spread across the length and breadth of the country. They are everywhere now. Its stores can be found in cities like Aurangabad, Ahmednagar, Bengaluru, Belgaum, Chandrapur, Chennai, Coimbatore, Dhulai, Hubli, Hyderabad, Jalgaon, Kolhapur, Mumbai, Pune, दिल्ली, गाजियाबाद, रुड़की, जहां तो मैं खुद देख के आया हूं, दे आर इन हरिद्वार, दे आर देयर. It operates about 150 stores, of which over 140 are via franchisee route. तो इनके 150 स्टोर्स हैं फ्रॉम द बुक, एंड जिसमें से 140 इनकी फ्रेंचाइजीज. और बच्चों जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, now in 2023 they have 300 stores which are operating in 100 different cities. तो अब इनके पास 300 stores हैं. तो पहले लेसर स्टोर्स थे 150, तो उनकी जो प्रेजेंस जो रेवेन्यू था वो 55 करोड़ का था. अब जस्ट डबल है, तो ऑब्वियसली द रेवेन्यू might have doubled as. So it's a very good information from the perspective of examination and from the perspective of understanding the franchisee mode of business. फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, कैसे एक कंपनी के 150 स्टोर्स हो सकते हैं जिसमें से 10 स्टोर सिर्फ उस कंपनी के हैं और 140 स्टोर उन लोगों के हैं, those who have put their trust and money into the company. Fair enough. Let's move on to point number 5, facts behind franchising. Few facts are there. The company is looking to strengthen its pan-India franchisee network. तो कंपनी चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे देश भर में इनकी फ्रेंचाइजीज खुल जाएं. और बच्चों यहाँ पे एक टर्म मैंने यूज किया है, पैन, PAN. इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, पीपल, जस्ट पीपल एंड नेचर across the country. It is targeting specially tier 1, tier 2, tier 3 cities and small towns for expansion and opening a greater number of stores. तो छोटी छोटी जगहों पे बच्चों, छोटे छोटे ऐसे एरियाज जो which are not fully developed, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट एनकैश हो रहा है, because it is very rightly priced, and people in spite of eating other things, they can go for it, and it is very delicious, full of spices and green chilies. मैं चाहता हूं that you should once have it, and then you can understand the real quality of this product. Third point, it would like to partner with potential franchise partners who can invest 10 to 20 lakh rupees. तो जो लोगों के पास 10 से 20 लाख रुपया है,
अपने काम में इन्वेस्ट करने का, वो इनके साथ पार्टनर्स बन सकते हैं एंड दे कैन ओपन देयर फ्रेंचाइजीज. For opening a Goli Vada Pav #1 store, area requirement is 350 square feet. बहुत बड़ा एरिया भी नहीं चाहिए. एक रूम प्लस a small kitchen at the back, जहाँ सारी चीजें अरेंज हो सके. Not that. Fifth point, the preferred location. Now, this is an important one. The preferred location for opening an outlet is a high street traffic areas like market, colleges, business areas, and residential catchments. तो जो preferred location है गोली वड़ा पाव की, वो थोड़े से क्राउडेड एरियाज हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे शाम को लोग निकलते हैं, दोपहर को निकलते हैं, सुबह निकलते हैं. सो दे कैन हैव दिस डेलिकेसी फॉर दैट. So this is facts behind franchising. The training and development. बच्चों मेरी बात आप याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में आपने इस बात को सारी जिंदगी नहीं भूलना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में एक चीज प्लेज अ की रोल, की इंग्रेडिएंट, एंड दैट इज इट्स पीपल आर trained and they are evolving, they are growing. If the people are not trained and they are not evolving and growing, ये जो शेडो है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल पे नजर आता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज वेरी वेरी, and it has to be very very creative. It should not be burdensome, but it has to be very very creative, so that people can check their flaws, check their shortcomings, and then they can improve. When the people will improve, the organization is surely going to improve. Let's take up the first point in from point number 6, the training and development. The franchisee will get the 8-year-old well-established brand name with standard operating procedures in all the aspects of the business. अब ये franchisee है जो कि 16 years old हो चुकी है, इनका SOP इंटैक्ट है, रेगुलरली उसे अपडेट किया जा रहा है. बच्चों SOP होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन के जो सबको फॉलो करने पड़े. मैं वो एक एग्जांपल देता हूं. किसी भी कंपनी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रिटेल कंपनी का अगर है, स्टोर ओपनिंग एंड स्टोर क्लोजिंग, स्टोर ओपनिंग एंड स्टोर क्लोजिंग, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है. भाई स्टोर खुलेगा 9:30 बजे और बंद होगा रात को 9:30 बजे. सुबह 9:30 बजे 9:30 AM पे द स्टोर विल ओपन एंड इट विल क्लोज डाउन और शट डाउन एट 9:30 PM. अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे क्या आता है कि कौन कौन व्यक्ति स्टोर ओपनिंग के टाइम पर प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट स्टोर मैनेजर एंड LOB हेड, तो ये स्टोर खोलेंगे. और कौन कौन लोग स्टोर क्लोजिंग के टाइम पे प्रेजेंट होंगे, वो होंगे स्टोर मैनेजर एंड LOB हेड. तो ये कुछ प्रोसीजर्स, कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं और इनको नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. यहाँ पर A to Z, the way the company works is being shared by the people, by their training department, and everybody comes on one page, a same platform, and then the company progresses. Second point, the company will provide initial and refresher training for business owners and store staff, and end-to-end logistics support and regular replenishment of stocks and operational support to monitor and drive the business. तो बच्चों जो भी स्टोर के बिजनेस ओनर्स हैं, जो स्टोर्स की फ्रेंचाइजीज चला रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, दोज हु आर वर्किंग ओवर देयर, तो इस पे एक कैजुअल अप्रोच आप नहीं रख सकते. द वे टू ग्रीट, द वे टू शेयर द मेन्यू विद द पीपल एंड द वे टू प्रोवाइड देम द प्रोडक्ट, ये बेसिक चीजें हैं. बाकी है अगर कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो कैसे उसे रिप्लेनिश करना है, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, तो सब निटी ग्रिटीज है रिटेल की, जिसे अगर फॉलो किया जाए और यहां पर किया जाता है तो इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज रिटेल. इसे तब कहा जाता है ऑर्गेनाइज रिटेल. हर चीज यहां पे ना ऑर्गेनाइज. और अगर इन सब चीजों को फॉलो नहीं किया जाता तो उसको सिंपली कहा जाता है अनऑर्गेनाइज रिटेल. अरे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप किसी रिटेल शॉप पे जाएं और वहां पर जाके आपको रिटेल शॉप पे परचेज का बिल ना मिले तो अनऑर्गेनाइज्ड.
और अगर आपको एक छोटी सी परचेज का ही बिल मिलता है, दैट इज एन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। तो जब हम डिटेल में इस यूनिट को करेंगे, तो मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा रिटेल के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो आगे चलते। फ्रेंचाइजी एड पेज टू फ्यूचर ग्रोथ। 5 पॉइंट्स आर देयर। बच्चों, फ्रेंचाइजी से क्या है कि कंपनी को एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, बट यस, देयर प्रेजेंस विल बी अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब। आज मैकडोनल्ड्स है, McDonald's is having n number of franchisees. Few days ago I took a case study on Domino's Pizza. उनकी 17,500 फ्रेंचाइजीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें से 600 प्लस इंडिया में है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ फ्रेंचाइजी मोड से। तो 7th पॉइंट ले लेते हैं। The brand's offering are economical and for the masses, therefore it has access to large customer base. तो जो भी ये प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं इकोनॉमिकल है और ये मासेस के लिए। सो दैट्स व्हाई कस्टमर बेस इनका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सेकेंड, it is committed to take vada pav from the streets of Mumbai to a brand which will be known ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चाहते हैं कि स्ट्रीट फूड को ये मुंबई से लेके पूरी दुनिया भर में मशहूर कर दे, सो दैट पीपल कैन हैव दीज डेलिकेसीज एंड दे कैन एंजॉय दिस rightly priced food, economical food, and which is also very very good for your tummy. Third point, growing popularity of the concept has encouraged Goli Vada Pav #1 to continue with its expansion plans. तो बच्चों, इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इससे इनको मदद मिल रही है टू एक्सपैंड। देखिए, जब आपका प्रोडक्ट में ताकत है, प्रोडक्ट अच्छा है एंड पीपल आर एप्रिशिएटिंग एंड लाइकिंग इट, तो नो बडी कैन स्टॉप इट फ्रॉम गुड। ये वो खुशबू है बच्चों जो घर में एक छोटे से गार्डन में खिलती है और पूरे घर में फैल जाती है। इट इज लाइक दैट। इफ यू आर डूइंग वेल, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, और एंड इफ यू हैव पैशन टू इनोवेट एंड टू बिकम क्रिएटिव थ्रू आउट, आई बिलीव you are going to have a say all across the globe. Fourth point, the brand encourages entrepreneurship and offers lucrative franchisee opportunities across India. तो बहुत ही lucrative, easy to adopt इनके measures हैं जो बहुत सारे लोग use कर पा रहे हैं, इतना costly भी नहीं है. So people are managing it and they are working very well. Fifth point, the company plans to have 500 outlets by the end of year 2015. जो still they are working on, but yes, plans are always to expand. So this is point number 7, and with this we have reached to a very important point, गोली वड़ा पाव द फैक्ट शीट। अब देखिए, थोड़े से पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इसे फाइंड आउट किया गया था? इट वाज फाउंडेड इन 2004 इन मुंबई, इंडिया। फाउंडर इज वेंकटेश अय्यर। Headquarters are in Vikhroli, Mumbai, Maharashtra, India. Key people, Venkatesh Iyer. Number of employees, 150 to 200 in 2016. Parent, Goli Vada Pav Private Limited is the name. Products, Vada Pav and Sabudana Vada Pav. And revenue in 2015 is rupees 55 crores. So this fact sheet, I believe it's going to serve you very well while answering, questions for the examination or in the examination. So, with this, we have come to the end of this case study. And as you know, this is our unique value proposition, or you can call it our UVP, that we always provide questions from the case studies in order so that you can revise whatever you have studied. तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक केस स्टडी को अगर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली आंसर ना कर पाए तो 1 से 2 बार इसको देखें, उन बच्चों के साथ भी शेयर करें, those who are in need of it. And I'm telling you again and again, it's our free service we are providing to the students across the country. Free service so that they can study and they can do very well in their subject entrepreneurship. So let's take up the questions now. बट थोड़ा सा मैंने डिजाइन चेंज किया है क्वेश्चंस का, तो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दैट। पहला क्वेश्चन है,
It follows franchisee business model, Goli Vada Pav, GVP, and today is uniquely positioned in India. Which segment? The segment is quick service retail, that is QSR. The answer is QSR. Second, the brand store offers quality and hygienic food, which is quite dash. And the options आपको given होंगी और आपने सही option choose करनी, which is quite affordable. Third, Goli Vada Pav, a quick serve food concept with authentic Indian touch, originated in Mumbai. कब start हुआ था? You all know that in 2004. That is 2004. This has brought us to our question number 4. Goli Vada Pav dash Vada Pav, a humble street food popular in Mumbai, into a branded fast food concept. तो बच्चों जो डैश है यहाँ पर क्या आएगा? आपको ऑप्शंस गिवन होंगी. राइट ऑप्शन इज पैक्ड. गोली वड़ा पाव पैक्ड वड़ा पाव. इसे पैक किया जाता है. मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ. पीछे एक पिक्चर है. ऐसे इस प्रकार से पैक किया जाता है. देखिए, हियर इट इज. इस प्रकार से इसको पैक किया जाता है एंड बीइंग सर्व्ड टू यू. तो गोली वड़ा पाव, packed vada pav, a humble street food popular in Mumbai, into a branded fast food concept. Fifth question. The brand has opted for franchisee business models to grab a quick bite into the Indian quick serve business. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आपको 2 मार्क्स में आएगा, ट्रू और फॉल्स, और आपने लिखना है द स्टेटमेंट इज ट्रू. Sixth question. The brand's founders Venkatesh Iyer realized the huge scope of business in dash the adult and lower income customers. Options given honge. The right option is step. The brand's founders Venkatesh Iyer realized the huge scope of business in tapping the adult and lower income customers. Seventh question. Goli Vada Pav number 1 reaffirms the fact that a strong homegrown concept can not only thrive but also compete with international brands. True and false? Obviously true. Eighth question. Goli Vada Pav is a typical food made of spices. Goli Vada Pav is a typical dash food made of spices, vegetables, and mashed potatoes packed in vada pav. And the right option is finger. It's a finger food. The options given hogi and you have to choose finger. Ninth question. Yearly revenue of Goli Vada Pav in the year 2015 is 55 CR. Is it true or false? It is for you to choose. अब आपको बताना है इसको. और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा. मैंने that's why I left it, unmarked. And the last question. Goli Vada Pav had its headquarter in Vikhroli, Mumbai, Maharashtra, India. क्या ये true है? Yes, true. So, bachcho, we have taken up 10 questions. We have taken up the case study of Goli Vada Pav. I hope you have understood each and every word of it. So, thank you very much. If you have any questions, any doubts whatsoever, you may please ask me. But before I move on, एक बार से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं. Launched in 2004, you all know that. The concept of Goli Vada Pav. 2 key people are responsible for it. Venkatesh Iyer and Shiv Menon. मैंने दोनों की फोटोग्राफ दे रखी है so that you have no doubts in recognizing them. Shiv Menon. ये Shiv Menon. It's the idea of Indian finger food. अब आप समझ गए हैं, जब हम खाने को उंगलियों में पकड़ के खाते हैं, that is a finger food. और QSR मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स, सबवे, क्विज़नोज एंड मोर. और जो छठा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका अपने प्रोडक्ट पर बिलीफ है, अगर आप मानते हैं दैट यू आर डूइंग टू मच ऑफ हार्ड लेबर ऑन इट, टू कुक इट, टू प्रिपेयर इट, it can compete with international brands. There is no worry about it. And that is the power of, entrepreneurship. It became so special because it is served under
hygienic conditions. It's quite affordable, and it is being served in an organized way. The journey till now, earlier, it was in 40 Indian cities. अब ये देश भर के लेंथ एंड ब्रेड्थ हर जगह फैलता जा रहा है, और बहुत सारे शहरों के नाम मैंने आपको बताए हैं इन पॉइंट नंबर 4. एंड द लास्ट वन जो पॉइंट थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड है कि from book I got that they were having 150 stores, and जिसमें से 140 are via franchisee route. But अभी in 2023 they are having 300 stores and which are operating in 100 different cities. फैक्ट्स बिहाइंड फ्रेंचाइजिंग, आपको 10 to 20 लाख रुपीस चाहिए, और आप 350 स्क्वायर फीट आपके पास एरिया होना चाहिए, और वो भी ऐसी लोकेशन में जहां पर मार्केट हो, कॉलेजेस हो, बिजनेस आउटलेट्स हो, या रेजिडेंशियल कैचमेंट्स हो, तो वहां पर आप इस इसको खोल सकते हैं. इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल. आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल. अब बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में क्या है कि अगर कोई चीज है रिप्लेनिश करनी है, फॉर एग्जाम्पल दे वांट टू रिप्लेनिश, और जैसे रीऑर्डर करना चाहते हैं पैटीज को, टिक्की को, तो टिक्कियां बनाई नहीं जाती, वो पैक्ड आती हैं पहले से. इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी. अगर यही पैटीज आपको गाजियाबाद में मिलेंगी, यही पैटीज आपके एरिया में मिलेंगी, तो जो इसका बनाने का एरिया होगा दैट इज अ नियर बाय हब, जहां पे प्रिपेयर की जाती है विद द सेम इंग्रेडिएंट्स एंड सेम स्पाइसेस, सो दैट आप कहीं पर भी इसको खाएंगे यू विल हैव द सेम फ्लेवर. और फ्रेंचाइजिंग से इट इज एक्सपैंडिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, एंड it is serving masses because the product is rightly priced and it is very hygienic. और मुंबई की स्ट्रीट से निकल के आज गोली वड़ा पाव दुनिया भर में पहुंच गया है, and people are really relishing. So बच्चों, I have taken the fact sheet as well about Venkatesh Iyer and Goli Vada. So बच्चों, I have taken question answers as well, 10 question with hints. So with this, we have come to the end of today's case study. I hope this is going to help you. आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. आप मैसेज बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ दीजिए. देन एंड देयर वी आर गोइंग टू रिप्लाई बैक. तो बच्चों, these are my more channels. If you want to get encouraged, you can check those channels as well. And this is my profile. If you wish to have a look towards my profile, I have shared the link with you. So it's a presentation by Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. So it is another case study for class 12th grade students from Lucky Pushrat of Mavericks India Solution. See you all in the next case study. Till then, keep studying, keep learning, and keep growing. Bye-bye for now.